क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग किसी से मिलने की कुछ ही सेकंड के अंदर उसके बारे में एक राय बना लेता है। ये सिर्फ एक अनुमान नहीं है, बल्कि मानव मनोविज्ञान का एक बहुत गहरा सच है। तो चलिए आज इंसान के मन के कुछ ऐसे ही छिपे हुए पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। हम सब ने कभी न कभी ये महसूस किया है ना? किसी दोस्त के इरादों को गलत समझना या किसी सहकर्मी के बारे में गलत धारणा बना लेना। पर ऐसा होता क्यों है? क्या ये सिर्फ एक गलतफहमी है या इसके पीछे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक कारण छुपा है? देखिए, इसका जवाब हमें बाहर की दुनिया में नहीं मिलेगा। ये तो हमारे अपने मन की, आप कह सकते हैं, एक जटिल भूल भुलैया में छिपा है। और मनोविज्ञान हमें वो चाबी देता है जिससे हम इन रोजमर्रा की पहेलियों के ताले खोल सकते हैं। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उस पहली नजर की जो किसी के बारे में हमारी पूरी कहानी लिख देती है। मनोवैज्ञानिक इसे थिन स्लाइस जजमेंट कहते हैं। आप सोचिए, हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह है जो किसी के हाव भाव, आवाज या बस पहनावे को देखकर ही कुछ ही सेकंड में एक फैसला सुना देता है। और सबसे मुश्किल बात पता है क्या है? ये पहली धारणा अक्सर हमारे दिमाग में पत्थर की लकीर बन जाती है। अब जो चीज इस पहली धारणा को और भी पक्का कर देती है वो है कंफर्मेशन बायस। कभी गौर किया है कि जब हम किसी के बारे में कुछ मान लेते हैं तो हमारा दिमाग सिर्फ उन्हीं सबूतों को ढूंढता है जो हमारी बात को सही साबित करे। हम अनजाने में ही एक वकील बन जाते हैं जो सिर्फ अपने केस के लिए दलीलें इकट्ठा करता है। जैसे मान लीजिए आपने सोच लिया कि आपका नया सहकर्मी मिलनसार नहीं है। अब आपका दिमाग क्या करेगा? वो सिर्फ उस एक पल को याद रखेगा जब उसने आपको नमस्ते नहीं कहा, और उन कई मौकों को पूरी तरह से अनदेखा कर देगा जब उसने आपकी मदद की पेशकश की थी। ये छोटा सा मानसिक शॉर्टकट हमारे रिश्तों पर बहुत गहरा असर डाल सकता है। और फिर आता है हैलो इफेक्ट। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी के सिर पर एक प्रभामंडल हो। अगर कोई व्यक्ति बहुत कॉन्फिडेंट या अट्रैक्टिव दिखता है तो हम अपने आप ही मान लेते हैं कि वो इंटेलिजेंट भी होगा, भरोसेमंद भी होगा, भले इसका कोई सबूत न हो। मतलब एक अच्छा गुण उसके बाकी सभी गुणों पर पर्दा डाल देता है। तो चलिए अब आईने का रुख जरा अपनी ओर मोड़ते हैं। दूसरों को समझने के बाद अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी अपनी मनोवैज्ञानिक दुनिया कैसे काम करती है। इसे कहते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट। हमें लगता है कि अगर हमसे कोई छोटी सी भी गलती हो जाए तो जैसे पूरी दुनिया की नजरें हम पर ही टिक गई हैं। लेकिन सच्चाई तो बिल्कुल हैरान करने वाली है। असल में 95% लोग अपनी ही सोच और चिंताओं में इतने डूबे होते हैं कि उन्हें आपकी गलती नजर ही नहीं आती। तो अगली बार जब आप किसी सोशल सिचुएशन में घबराएं तो बस ये याद रखिएगा कि आपके सिर पर जो स्पॉटलाइट जल रही है वो असल में सिर्फ एक छोटा सा बल्ब है जिसे सिर्फ आप देख पा रहे हैं। यकीन मानिए, ये एक छोटी सी सोच आपकी घबराहट को काफी कम कर सकती है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी के कमरे में आते ही पूरा माहौल बदल जाता है, या किसी दोस्त के साथ बैठकर आप अचानक ही उदास महसूस करने लगते हैं? इसे कहते हैं इमोशनल कंटेजन या भावनात्मक संक्रमण। जी हाँ, भावनाएं चाहे अच्छी हो या बुरी संक्रामक होती हैं। ये बिल्कुल पानी में फेंके गए पत्थर की तरह हैं, जिसकी लहरें दूर तक जाती हैं। सोचिए, अगर ग्रुप में एक व्यक्ति तनाव में है तो धीरे धीरे उसकी वो एनर्जी दूसरों को भी प्रभावित करने लगती है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि खुशी और पॉजिटिविटी भी उतनी ही तेजी से फैलती हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी अपनी भावनाओं का दूसरों पर कितना बड़ा असर पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं उस अदृश्य शक्ति की जो हमारे हर फैसले और हर रिश्ते को चलाती है, और वो है जुड़ने की हमारी गहरी इच्छा। हम खुद को बहुत तार्किक, बहुत लॉजिकल समझना पसंद करते हैं, है ना? पर सच तो ये है कि हमारे ज्यादातर फैसले दिल से लिए जाते हैं, दिमाग से नहीं। हमारा दिमाग तो बस बाद में आता है उस फैसले को सही ठहराने के लिए अच्छी अच्छी कहानियां घड़ने। और यही बात रिश्तों की सबसे गहरी सच्चाई को सामने लाती है। याद रखिएगा, सुने जाने का एहसास किसी बहस को जीतने से ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। जब हम किसी को बिना टोके और बिना जज किए बस सुनते हैं तो हम शब्दों से नहीं बल्कि अपने ध्यान से एक पुल बनाते हैं। ये विश्वास का, सम्मान का पुल है जो हर रिश्ते की नींव होता है, चाहे वो दोस्ती हो, परिवार हो या फिर काम की जगह। तो इन सभी मनोवैज्ञानिक सच्चाइयों से हमें आखिर क्या सीखने को मिलता है?
चलिए इन बिखरे हुए धागों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। हमने देखा कि हम लोगों को आंकने के लिए अक्सर मानसिक शॉर्टकट अपनाते हैं। हमने ये भी समझा कि हमारी भावनाएं कैसे फैलती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने ये जाना कि समझे जाने की इच्छा हमारी सबसे गहरी जरूरतों में से एक है। और शायद यही सबसे महत्वपूर्ण सबक है कि असली बदलाव लोगों को बदलने की कोशिश करने से नहीं आता, ये उन्हें समझने से आता है। तो ये ज्ञान अब आपके पास है। सवाल ये है कि इस नए नजरिए के साथ आज आप अपने जीवन में किसे थोड़ा और गहराई से, थोड़ी और हमदर्दी से समझने की कोशिश करेंगे। All right, let's get right into it. We're going to explore 7 pretty fascinating psychology facts that honestly might completely change how you see other people and maybe even yourself. We're about to decode some of those subtle, almost invisible patterns that drive what we do every single day. So let me start by asking you this. Have you ever just looked at someone and thought, why on earth did they do that? Or maybe you've looked back at your own actions and thought, what was I thinking? Well, you are definitely not alone. And we're about to figure out why that happens. Okay, so here's our game plan for this explainer. First, we'll decode our everyday behaviors. Then, we'll look at the sneaky judgment shortcuts our brains take. After that, we'll dive into our social surroundings, unpack that tug-of-war between emotion and logic, and then wrap it all up with a whole new way of looking at things. So first up, decoding our daily behavior. This is really where everything starts. In literally the blink of an eye, our brains are constantly making these little assessments and assumptions about everything and everyone around us. Let's see how that works. And that brings us to this first idea, thin sliced judgment. Think of this as your brain's superpower, but it can also be its greatest weakness. It's this incredible ability to make a snap judgment about someone based on just a tiny sliver of information. We're talking split-second decisions here. And here's a perfect example of that in action, right? You see someone who's quiet in a meeting, and your brain just leaps to a conclusion. Oh, they're not interested. But what's really going on? They could be the most engaged person in the room, just thinking things through. It's a huge reminder to always question that first instinct. Okay, so now that we know how fast our brains work, let's pull back the curtain a little bit and look at the hidden biases that are really pulling the strings. These are the judgment shortcuts that shape how we see the world, a lot of the time without us even realizing it. So this first shortcut is a mental trap that, let's be honest, we all fall into. Confirmation bias. It's basically our brain acting like a bouncer at a club. It only lets in the information that agrees with what we already believe, and it kicks everything else to the curb. Here's a classic case. You decide your new coworker is unfriendly. Okay, now suddenly your brain is on a mission collecting every little piece of evidence to prove you right. You'll notice every time they look busy or stressed, but you'll totally ignore the times they were helpful. Our beliefs don't just reflect our reality, they actually create it. Next up, we've got a bias that is basically a real-life Instagram filter for people, the halo effect. This is when one single good trait, say someone's really charming, casts this beautiful golden glow over everything else about them, making them seem smarter or more capable than they might actually be. So you meet someone, and they seem really confident and attractive. And boom, the halo effect kicks in. Your brain starts filling in the blanks. Well, they must be intelligent and trustworthy and great at their job. But what evidence do you have? None. The key here is to look for facts, not just feelings. All right, so we've looked at the biases inside our own minds. Now, let's look outward at how the people around us have a huge influence on how we think and feel. This is all about our social surroundings. The main idea here is something we've all felt, even if we didn't have a name for it. And it's simple. Emotions are contagious. Yeah, like a cold. They can spread from one person to another, often without anyone saying a single word. And this is exactly how it works. I mean, think about it. One stressed out person can make an entire team feel on edge. A really negative person can just suck the energy right out of a room. But, and this is the good news, one positive person can literally lift up an entire group. It's a really good reason to be mindful of the energy you're putting out there and the energy you're taking in. Oh man, has this thought ever crossed your mind? You trip on the sidewalk, you spill your coffee, you say something awkward, and you're just convinced every single person saw it and is judging you? Well, that feeling has a name.
It's called the spotlight effect. And the truth is, that giant spotlight is pretty much just in your own head. The reality is that most people are way too busy being the main character in their own movie to pay that much attention to you. So next time you make a tiny mistake, just take a breath and remember, you're not on stage. You're just human. Okay, now let's get to the heart of it all. Emotion, logic, and connection. We're about to look at that hidden dance between our feelings and our thoughts, and what that really means for our relationships. You know, we love to think of ourselves as these rational, logical beings. But this right here reveals a pretty surprising truth. A lot of the time, our emotions are the ones in the driver's seat. They make the choice. And our logical brain, it's just the passenger, scrambling to come up with a good story to justify where we're headed. This is one of the most important lessons in all of human relationships. We get so caught up in trying to win an argument, to prove we're right, that we totally forget what the other person actually needs. And that's just to feel heard. Next time you're in a disagreement, just try to understand their point of view instead of just trying to win. It can change everything. So after all of this, where do we land? Let's tie it all together in this last section, a new way of seeing, where we turn all these facts into actual tools we can use. So what do you do with all this? You use it. Understanding these things is like getting a whole new toolkit for life. You'll find you have more patience because you know people are driven by things they aren't even aware of. You'll be a better communicator because you know listening is key. And you'll have more self-awareness, which is probably the most important tool of all. And we'll leave you with this final thought. You can't really change other people. You just can't. But you can change how you see them. And when you start to understand the hidden things that make people tick, you'll find you have more compassion, better connections, and way more power to build the kind of life you want. It all starts with that one decision to just see the world and everyone in it with fresh eyes.